Hello, students. Good evening. So sorry for running late, but as it is said, good things take time. So I think I should be excused for this lapse of 7 minutes. Um, Before we begin, first things first, let's very quickly do a mic check. Can you all hear me properly? Now, what I'm be doing today, guys, is a super important topic. And when I say it's super important, I literally mean to say that if ever you are going to stumble upon a grammatical rectification, it has to be around this topic. So this is like the mother of all grammatical errors. If you begin to understand this topic properly, I am sure, half of your, say 80% of, our grammar rectifications are simply going to, they're going to be taken care of. Let's just put it like that, right? But first things first, like I said, I need to know if you all can hear me. Or is it that I am just, my words seem to be falling on deaf ears? Can you all hear me? सुनाई दे रहा है ढंग से अच्छे से? If you can just take the chat box to be writing to me, हाँ मैम सुनाई दे रहा है ठीक है सब कुछ. Also, you can, probably engage in telling me how are you guys doing and how's the preparation coming up with the days getting closer. I am sure you all must be, going through all of those jitters, the pre-examination jitters and the anxiety and everything, and it's just going to happen. I mean, as and when we come closer to the date, it always happens like that. So I think it's very normal, and in fact, it's a good thing it happens because if it is not happening, then I think then there's something really wrong. So all of these anxieties and these things must be there. They in fact tend to play fair. Okay, all right. So the yes in the chat box is something that I'm taking for the fact that you all can hear me. Okay. Now, I think my head seems to be coming, just upon a little bit of portion of the PPT. I will have to see how can I, like sort of readjust that. That I will maybe bend down or do something. Let me just do some acrobat here and there. But we'll see what and how it needs to be. I will try and ensure that at least the last words are something that I read out for you so that we don't waste any more time looking at the logistical issues, which shouldn't idly be, taking a lot of our time. Okay, now the topic that we have for today, guys, is called subject verb agreement. Like I said, it is a very, very important topic, and I cannot stress enough on how important it is or the importance of this in terms of examination and questions. Whenever there is going to be a grammatical rectification, they will want to and they will definitely ask. So it's like ऐसे समझो कि अगर उन्होंने subject verb error नहीं पूछा ना तो उनका ऐसा पेट में दर्द होने लगेगा. उनको लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग? Why are we not asking this? So which is why in the starting itself I mentioned that it is like the mother of all error detections. And a lot of our grammatical understanding also pretty much stands on this topic. So it's very important that we need to have clarity of what exactly subject verb A is. Second, what is this entire, why is there such a ballyhoo of subject verb agreement? Why must we always be very specific about it, or why should we be so careful about it? Now, starting with first, what we're going to do is very quickly we're going to see what does the word subject and then what does the word verb begin to mean, and then we are going to talk about the arrangement as to how can we grammatically structure a sentence and ensure that a sentence is free from any sort of subject verb disagreement. Okay, I hope you guys have your pen and papers ready because we are going to be doing a lot of rules. The subject verb agreement is a very funny topic at times. When I say funny, I mean to say that there are a few topics, there are a few rules which are going to go by logic. Then comes those doozy rules, which are going to be aside from logic. That is, it is just a rule. It is scripted in the history of grammar, and that is something that, we also begin to just understand. So there are going to be some very typical rules, and then there are going to be some very unusual rules, something that you might have just studied as of today, or something that's new, or something that you've always studied your life but never really paid attention कि अच्छा ये भी तो ध्यान देना होता है हम लोग को. So please be ready with pen and paper because trust me, it is going to be something that you would want to note down. All right, now without further ado, let us begin. Now, what is a subject? Now, if you go back to your childhood memory,
You're the first memory of grammar that you ever have. I think सबसे पहले हम लोगों को हमारी teachers ने सिखाया था before moving on to any part of speech. So before getting on to what is a noun, what is an adjective, what is an adverb, and the other parts of speech that we have, our teachers always told us that every sentence in English can be divided into two halves. राइट कोई भी सेंटेंस हमारा दो हिस्से में बहुत ही इजीली डिवाइड हो सकता है एंड दोस टू पार्ट्स नेमली बीइंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सो सब्जेक्ट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज परफॉर्मिंग द एक्शन तो जो भी एक्शन कर रहा होता है सो द एक्शन डूअर is always known as the subject while whatever remains दैट इज जो भी सेंटेंस में बच रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट बोल देते हैं तो अगर मेरे पास एक सेंटेंस है से फॉर एग्जांपल दैट सेज राम इज प्लेइंग विथ हिज डॉग so if I have a statement and I need to break the statement into what we just discussed, subject and predicate. So ideally, I know that a subject is going to be the action doer or anything that is going to perform the verb. So clearly in the sentence above, Ram is going to be the subject and whatever remains in the sentence is going to be the predicate. हम लोग subject object करके भी sentence को break करते थे. Remaining part को हम लोग predicate क्यों बोलते हैं? Because predicate comes from the word predict. Right? That is, you are पहले से ही बता रहे हैं what the remaining part of the sentence and the formation of that sentence should be or is it likely to be. Now, why is the remaining part of the sentence so dependent on the subject or why is it that our understanding of the subject becomes very very important? Because अब देखो sentence में Ram is playing. हम लोग ने Ram are playing क्यों नहीं किया? That is because Ram is singular. Now, अगर हमने subject को identify नहीं किया होता तो क्या हम लोग कभी भी बता पाते कि राम इज सिंगुलर ओवर हियर? नो. सो द सब्जेक्ट इन अ वेरी अनअनाउंस्ड मैनर, इन अ वेरी अनवोकल मैनर, quickly tells us the first thing about a sentence structure which is called the number. Likewise, let's read further. Ram is playing with his dog. Now, why do you think do we have a his? Why can't we have a her over here? Because upon identifying the subject, we also understood that the subject was a male. Now, had we not recognized our subject, we would have never known that Ram is going to be a male, which is why हमने यहाँ पे his लगाया. So that means the second most important thing that the subject will always tell us is the gender. And to ensure that there is semblance of idea. Semblance मतलब पूरा का पूरा sentence structured है. There is some sort of logic also that is going in the sentence, which is why it becomes very important for us to be able to know what the subject is, which is why getting back to second part को हम लोग predicate बोलते हैं because वो predict, that is उसका formation कैसे होना है, that entire half is predicted basis the subject that we have. So quickly let's just revise. What is a subject? A subject is going to be an action doer or a subject is going to be anything that is going to perform the verb or anything which is the protagonist of the sentence. Protagonist. Protagonist. Now, who is a protagonist? In simple language, protagonist को हम लोग बोलते हैं lead. अब क्या होता है 80% of the time sentences में हम लोग बहुत easily recognize कर लेते हैं हमारा subject क्या होता है because subject action को perform कर रहा होता है. Right? That is, the action is being, the verb is being performed by the subject. So over here, Ram is playing. So who is doing the action of playing? It is clearly Ram, which is why Ram हमारा subject बन गया. Now 80% of the time, like I said, sentence में यही structure रहता है. But a lot of times you could have dormant sentences. Dormant sentences generally are going to be the kind of sentences in which the subject is not performing the verb. Then at that point of time, how do we know भाई subject क्या होगा? That in such recognition or at such times is when the second rule of identifying the subject comes into play, which is called the rule of the protagonist. जिसके बारे में sentence बात करता है, subject हमेशा वही होता है. So अगर मेरे पास एक sentence है that says, for example, there are many burgers
on the table, right? So now if I were to guess as to what do you think the subject is likely to be, then clearly over here, what is going to be our subject? Our subject is going to be burgers. Although burgers is not doing any action, unlike the previous statement, जिसमें वो playing कर रहा था. So burgers is not doing anything. Burgers is on the table. But still, we do know that it is going to be the subject because पूरा का पूरा sentence किस पे बात कर रहा है? वो sentence table पे बात नहीं कर रहा है. वो table पे रखे burgers की बात कर रहा है. Which is why it is going to be the subject. Right? So the two ways in which we can recognize what the subject is going to be is A, by the rule of the protagonist. Second, by ensuring or by identifying who is performing the verb. That is, aka also known as action doer. Once we have identified what the subject is going to be, the entire idea of subject-verb agreement simply goes to say that जो भी हमारा verb हो, right? अब verb जो है हमारे वो ideally तो 8 type के verbs होते हैं, but हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 major type के verbs की बात करेंगे. A, first is going to be the main verb, the other is going to be our auxiliary verb, also known as helping verb, right? So the entire topic जो हमारा subject verb agreement का है वो क्या कहता है कि sentence grammatically सही तभी होगा. A sentence will only be grammatically correct when there is an agreement between the subject and the verb. And how must the agreement be? Agreement is going to be singular subject always takes a singular verb, while a plural subject will always take a plural verb. Now this is the universal principle. यूनिवर्सल प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि जब जब आपके पास ऐसा सेंटेंस आएगा, you will always want to come down to this arrangement. You will always want to come down to ensuring that this equation is maintained. If ever you come at a crossroad where you're not able to find out, what this is going to be, then the basic thing that you need to do is go back to the sentence, अपना subject निकालो, फटाफट उसके corresponding verb को देखो and see if the verb is in agreement with the subject or not. If not, or a lot of times, like I said, we have a few peculiar rules also. Now, maybe a sentence might not stand in tandem with this rule, but it is going to go in it's going to go in accordance with any of the exceptions. Simply why? Because it might fall onto one of those categories. Right? So all in all, अगर हम लोगों को sentence में कभी भी समझना होता है कि subject verb agreement कैसे बनता है या sentence हमारा grammatically correct कब बनता है, so then over there our basic rule or the one thing that we will have to always verify will have to be singular subject needs a singular verb while a plural subject needs a plural verb. तो जब मैंने बोला राम is playing with his dog, यहाँ पे राम के बाद is क्यों लगा? क्योंकि राम singular था. अभी यही सेंटेंस होता द बॉयज डैश प्लेइंग विद द डॉग, तो द बॉयज आर प्लेइंग. क्यों? क्योंकि बॉयज प्लूरल था और क्योंकि वो प्लूरल था इसीलिए उसके बगल में लग गया आर. Okay, so there's a question in the second sentence. Which one is a subject, burger or there? Okay, so the subject over here is going to be burgers. Now that brings me to a very important point. हम लोग ने बचपन से हमेशा ये सीखा है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से होता है कि 80 to 90% of the time sentences will begin with the subject. देखो यहाँ पे राम आ गया, या अक्सर आप कभी भी देखोगे most of the times आपका sentence start ही हो रहा होगा किसी subject के साथ. But understand guys, ऐसा कोई short rule नहीं होता है. There is absolutely no thumb rule that says that a subject must always be in the start. A sentence needs to have a subject. That is, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बिना सब्जेक्ट के नहीं बन सकता. प्रेडिकेट ना हो चलेगा, पर बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता. सो व्हाट इज नॉट ऑफ अश्योरिटी इज द फैक्ट दैट सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो. राइट? सो सिंपल, आई विल अगेन जस्ट deconstruct or I'll reiterate it. In English grammar, no sentence can ever be made without the subject. बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. सो व्हाट इज नॉट ऑफ गारंटी इज कि सब्जेक्ट कहाँ होगा. But what is of guarantee is subject होके ही देगा. So over here, if you just see the first sentence, Ram is playing, तो राम पहले ही आ गया, starting में ही आ गया. But if you just see the second statement, that is, there are many burgers on the table, यहाँ पे sentence आपका start हो रहा है there से. अब हमें तो लगता है first word तो हमेशा subject की जगह होनी चाहिए. But that is what the rule says. The rule says sentence में subject चाहिए. कहाँ चाहिए ये कोई rule नहीं है. There is no such rule
that can ever say that it needs to be after. Subject can be after predicate, yes, it can be anywhere. That's going to depend upon how you're going to. अब देखो passive voice जब तुम लोग करते हो तो passive voice में तो object पहले आ जाता है ना. Is that not right? सब्जेक्ट से जब लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो उनका बेसिक रूल हमेशा क्या कहते हैं? सपोज टू स्वैप द सेंटेंसेस. दैट इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस. सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे भी हो सकता है, जिसका जैसा मन वो बंदा वैसे सेंटेंसेस लिखेगा. बट इज देयर अ शॉर्ट रूल दैट सेज कि सेंटेंस में सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होना है? नो. सो दैट्स गोइंग टू बी अ टैबू दैट यू हैव टू ब्रेक फ्री. दैट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर सेंटेंस को सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होना है. करते हैं क्योंकि सेंटेंस थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगता है और सेंटेंस में पहले ही पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन बिकम्स इजी फॉर अस. बट अ सेंटेंस विल हैव अ सब्जेक्ट. वेयर विल इट हैव? समटाइम्स इट इज अपॉन यू टू बी पिकिंग अप. Okay, moving on to the next. Now, so clearly something that we just picked up, what exactly is singular? Singular comes from the word single, which means one. Plural is going to be anything which is going to be one and more. So मुझे minimum चाहिए two. Two के बाद अब मुझे infinity तक भी दे दोगे ना, मुझे कोई problem नहीं होगा. There is going to be no problem whatsoever. You just have to give me a minimum count of two. Okay. Now I'm going to be telling you something really interesting. Now we've understood that जब singular एक subject होता है तो उसको singular बोलते हैं. एक से ज्यादा subject, that is minimum दो subjects होते हैं तो उसको plural बोल देते हैं. What about the case जब हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है? That is हमारे पास जीरो सब्जेक्ट्स होते हैं. Now I know this must be confusing you guys, क्योंकि अभी तो मैंने तुम लोगों को 5 मिनट का लेक्चर देते हुए ये बोला था कि कैसे हो सकता है ये. Can a sentence ever be constructed without a subject? No. So how am I now proposing कि अगर what is going to happen अगर सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है? Now another revelation. Whenever you are trying to be correcting anything in grammar, guys, कभी भी कोई भी चीज जब आप सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो, trying to be applying grammar, then at that point of time always know it is always the usage that counts. It is never the face value. That is दिख रहा है वो काफी नहीं है, क्या दिखने में वो चीज यूज भी हो रही है वो भी तो जरूरी है. करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस वो बनेगा in which the usage matters over the visual of that sentence. So if I now have a sentence, for example, that says, the boy is playing. Okay? So यहाँ पे clearly boy मेरा subject है, boy singular है तो यहाँ पे लग गया is. Likewise अगर मैंने आपको बोल दिया the boys are playing, right? तो ठीक है, अभी यहाँ पे boys मेरा subject बन गया, boys plural है तो clearly यहाँ पे लग गया are. इतना तुम लोग को समझ में आता है. So this is clearly singular and this is clearly plural. Now, like I said, what about the time when you don't have any subject? Now, say for example, I have a sentence that reads as either the boy or the girl dash dancing. अगर मेरे पास एक ये सेंटेंस है, either the boy or the girl is dancing, तो अब इसमें मेरे सब्जेक्ट्स क्या है गाइस, एक बार जल्दी से बताना. अब सब्जेक्ट है मेरे पास बॉय और गर्ल, दोनों ही सब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन डांसिंग का दोनों ही कर सकते हैं. बट नाउ पे अटेंशन टू द फैक्ट, व्हाट आर दे बीइंग कॉन्जॉइंड विथ? दे आर कॉन्जॉइंड विथ आइदर और. आइदर और का क्या मतलब होता है? या तो ये या तो वो. अब अभी मैंने तुम लोग को बताया था, whenever we go about with grammatical rectifications, it is not the face value, it is not what you see that matters, it is the meaning that comes out from the sentence, that is what matters. So if I see the sentence here, visibly मेरे पास दो subjects है, एक boy है और एक girl है, but क्या ये and से जुड़े हैं? नहीं, ये either or से जुड़े हैं. What do you mean by the conjunction either or? Either or का मतलब है या तो ये या तो वो. So, हम लोग सबसे पहले क्या गलती कर सकते थे? हम लोग बेसिक गलती यहाँ पे कर देते कि हम लोग यहाँ पे जाके आर लगा देते. बट अगर हमने यहाँ पे आर लगा दिया होता तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि हम लोग ने एक म्यूचुअली कॉन्ट्रोडिक्टरी बात कर दी. पहले तो आपने बोला आइदर द गर्ल और द बॉय, फिर आपने लगा दिया आर, तो जिसके पास ये सेंटेंस जाएगा वो सोचेगा यार ये बोलना क्या चाह रहा था. पहले उसने बोला दोनों में से एक, फिर उसने दोनों वाला लगा दिया.
So this is what I meant by saying it is not the face value. तो यहाँ दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, झट से उसको देख के मत लगा दो, अप्लाई करो व्हाट आर दे कमिंग टुगेदर विथ, क्योंकि मैंने बोला आइदर और का मतलब है दोनों में से एक। तो अल्टीमेटली इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कितने लोग डांस कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर डांसिंग, इट इज जस्ट वन। व्हाट इज द dilemma is which one, so is it the boy or the girl, I don't know, right? But whichever it be, it is going to be one. So the correct usage of this is going to be is dancing, right? So this is what I meant by saying jo dikhta hai, that's not what matters, it is the meaning. Ultimately your grammatical rectification has to go hand in hand with the meaning of the sentence, not just to beautify the sentence. ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारी फेस वैल्यू वाली बात। अब एक बार वापस से आ जाते हैं स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन में, जब हम लोग ने बात किया था कि भाई जब जीरो हो जाता है सब्जेक्ट तो क्या करते हैं। अभी इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी, just a little bit. So now say for example I have a sentence that says neither the boy nor the girl is dancing, right? Now what are my subjects over here? अब मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे बॉय और दूसरा सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे गर्ल, राइट? तो दिखने में तो दो सब्जेक्ट है अभी मेरे पास, बट नाउ सी दो सब्जेक्ट होने के बाद भी ये दोनों कॉन्जॉइन किससे हो रहे हैं, दे आर कॉन्जॉइनिंग देमसेल्व्स विद नाइदर नॉर। अब नाइदर नॉर का क्या मतलब होता है, ना तो ये ना तो वो, दिस इज व्हाट नाइदर नॉर मीन्स, राइट? नाइदर दिस पार्टी नॉर दैट पार्टी। So ultimately, how many people are dancing in that sentence, guys? I will take a moment to pause because I need you guys to tell me what the answer is likely to be. So now when I say neither the boy nor the girl is dancing, तो अब neither the boy बोला nor the girl, तो अब क्या कोई भी डांस कर रहा है यहाँ पे? Nobody is dancing. And this is what is meant by having zero subject. That is, फेस वैल्यू पे तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता ना, तो हमें चाहिए, इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक, सो यू हैव टू हैव द मेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। बट व्हेन वी कम टू यूजेज, दैट इज उस सेंटेंस के मीनिंग में, तब कितने लोग डांस कर रहे हैं, कोई भी नहीं। सो अ न्यू लर्निंग फॉर यू गाइज इज गोइंग टू बी जीरो भी हमेशा सिंगुलर माना जाता है, जीरो इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड बिकॉज द काउंट ऑफ जीरो इज सिंगुलर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा आप लोगों को देखो, is. I have not put an R, I have put a is. Is everybody clear with this? Is everybody clear with when a subject becomes singular, when it becomes plural? Absolutely. अगर हमारे basics clear हो जाएंगे ना guys, तो फिर तुम लोगों को बहुत आराम से समझ में आने लगेगा. But if you get a little shaky in these basic terminologies or the basic approach to it, that's where हमारा सारा problem हो जाएगा. So if you feel that you're still confused, you let me know immediately. I will reiterate for you, right? But don't just sit with the idea that you seem to have understood. That's not going to help you at all. Is everybody clear with this? Is everybody clear with the concept of zero? Yes? I'm going to be, like sort of giving you some very new concepts. In fact, not new concepts. They're the kind of concepts जो हम लोग हमेशा पढ़ते थे. बट हम लोग ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस तरीके से। अब जब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं, तब हम लोग को समझ में आता है यार दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड वी एवर नेवर पे अटेंशन टू इट, इज हाउ इट्स गोइंग टू स्ट्राइक। बट इट्स ऑल ओके, यू आर स्टिल इन गुड हैंड्स, you will be able to memorize all of those things now. Okay, moving on to the next. So now let's just take a sample. After a plural subject is used, then verb is what? Okay. Now when we have plural subject, तो वो R में हो जाएगा ना। मुझे plural के लिए minimum 2 चाहिए, अब वो 2 के बाद 2 lack भी कर दोगे, it is not going to make any difference. Alright, Sky? Now, for example, a good student knows the value of communication skill. तो यहाँ पे हमारा subject क्या है? Student. तो मेरा verb क्या लग गया? Singular. Okay. Now, this brings me to another very, very important discussion. Verb में हमारे पास दो टाइप के verbs होते हैं, singular plural used, but where is verb? In which one, Gaikwad? I'm a little confused. Which question are we talking about? Spot error. We'll do it, Hitesh, after we finish the rules. So I'll take another 15-20 minutes to very quickly tell you guys the rules, and post then is when we're going to be starting.
ओके, सो नाउ व्हेन आई से अ गुड स्टूडेंट नोज द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है, तो क्लियरली हमारा वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। अच्छा, नाउ अगर ये वर्ब सिंगुलर है तो इसके बगल में एस क्यों लगा है? अब अभी ये भी तो गड़बड़ है थोड़ा सा, राइट? चलो इसको समझते हैं। नाउ वर्ब्स आइडियली आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, राइट? एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और इन दोनों में चलती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो नंबर को डिनोट करना हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है, मेन वर्ब का नहीं। सो द सेम एग्जांपल दैट वी जस्ट टुक व्हिच वाज द बॉय इज प्लेइंग, अभी इसी को ले लेते हैं वापस से, राइट? सो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, दैट इज गोइंग टू बी बॉय। बॉय यहाँ पे क्लियरली सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पे एंड मेरा मेन वर्ब प्लेइंग है, तो द वर्ड दैट इज ब्रिजिंग द मेन सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑक्सिलरी वर्ब था, इसीलिए नंबर डिनोट किया ऑक्सिलरी वर्ब ने, राइट? लाइक आई सेड, मेन में और ऑक्सिलरी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, राइट? व्हाट डज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन? कि जब बॉस होता है तो वो हमेशा काम, जब बॉस होता है तो जब हमारे पास वर्कर्स होते हैं तो फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट द वर्कर्स डू द वर्क। बट से फॉर एग्जांपल द वर्कर्स आर नॉट देयर, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काम तो होना ही है ना, तो वो कौन करेगा? वो आप करोगे। अगर आपके पास आपका हेल्पर है, आपके घर पे कोई एक आता है, काम वाम करके जाता है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या आप काम करोगे? नहीं, आपका हेल्पर कर रहा है ना। बट अगर आपके हेल्पर ने ले ली छुट्टी, that helper is gone, then at that point of time, who do you think is going to do the work? It has to be you. This is exactly the kind of delegation of authority that is shared by the main verb and the auxiliary verb. For every time you have an auxiliary verb in this sentence, the main verb will not show the number. It is going to be showed by the auxiliary because helper है ना इसके पास. But say for example, helper गायब है. That is, an auxiliary verb is not there. नंबर तो दिखाना ही है ना बॉस, नंबर तो वर्ब का काम है ही दिखाना. Then at that point of time, the main verb will show the number. Now, how will the main verb show the number? Verbs work the opposite of nouns. Now, pay very close attention to this. If I have a noun cat, अभी ये cat क्या है यहाँ पे? Cat singular है कि plural है? Clearly cat क्या है? Singular. अब मुझे cat को cat plural करना है, तो मैं क्या करूंगी इसमें? Cats कर दूंगी. I will simply put an S and then this word is going to become plural. Now, the classic idea is nouns में जब भी हम लोग को singular से plural करना होता है तो हम लोग उसमें एक S add कर देते हैं. That is, you just have to add an S and your noun can go from being singular to plural. However, verbs work in the contrast. That is, verbs work the opposite way. वर्ब्स को जब सिंगुलैरिटी दिखानी होती है तब वो एस लेता है, एंड जब उसको प्लूरैलिटी दिखानी होती है तब वो एस को ड्रॉप कर देता है. सो बाय दिस व्हाट आई मीन टू से इज दैट इफ आई हैड अ सेंटेंस दैट सेज द बॉय प्लेज, नाउ द रीजन व्हाई आई हैव पुट एन एस ओवर हियर इज बिकॉज माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर. डू आई हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब हियर? नो. Which means नंबर दिखाने का काम किसका हो गया? By default मेन वर्ब का हो गया. एंड अभी हम लोगों ने क्या सीखा था? मेन वर्ब अपनी सिंगुलैरिटी हमेशा दिखाएगा एस को लेके. और अभी यही सेंटेंस अगर प्लूरल हो गया होता, द बॉयज, ये चीज हो जाती प्ले. सो द बॉयज प्ले, अब प्ले ने एस नहीं लिया, क्यों? क्योंकि बॉयज इज बीइंग प्लूरल. जब प्लूरल होता है तो वर्ब मेरा एस को ड्रॉप कर देता है. So noun and verbs work in opposition. Nouns have a concept where if you do not have an S towards the end, it is going to be singular. If you have an S towards the end, it is going to be plural. Verbs, on the other hand, are if the verb is singular, वो S लेगा. Likewise, अगर आपका verb plural है तो वो S को drop कर देगा. Okay, verb is always plural form in native state. It is not always plural. You'll have to see which is being used.
राइट, उसको प्लूरल में जनरली, सो व्हेन देयर इज, उसको अगर हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट में छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट वो आपके सेंटेंस को देखेगा ना. All simple presents will not be in the same tense. So everything is going to depend on how the construction of the sentence is going to be. अब जब मैंने बोला the boy plays and then when I say the boys play, ये है तो simple present ही ना. But see, my verbs are different. That is, there is a difference of s. It all comes down to the kind of idea that you want to give out. Is everybody clear with this s wala concept? Because पूरा का पूरा subject verb agreement is going to depend on this clarity of ours. So we need to be very sure and we really need to know if we've understood the concept of S or not. Okay, so I'm just going to move forward now. Now likewise, if you see, अभी जो हम लोगों ने बात किया था, तो अगर हमारे पास no S ending on the noun often indicates singular. Student है ना? Student में हमारे पास S तो है नहीं, students नहीं है, वो student है. तो clearly हमारा subject क्या है? Singular है, right? Likewise, अब मेरा जो verb है, अब auxiliary तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे main verb ने क्या किया? मेरे main verb ने S को ले लिया. Because verbs will be able to show singularity only by taking in S. And मेरा universal principle क्या था subject verb agreement का? Singular subjects always take singular verb. So the reason why this is a subject verb agreement is because subject singular है, verb भी singular है. Likewise, अगर subject plural होता, तो अगर ये students होता, तो वहां बगल में मेरे no लग जाता. That is KNOW. It would have not taken any S. Now, let's also take an example of subject verb disagreement. Now, subject verb disagreement कब होगा? जब subject singular होगा but verb plural लग जाएगा, या तो फिर subject plural होगा और verb singular लग जाएगा. That is, we have to show that there has to be some disparity in the way the idea has been given out. So now over here, अगर students है तो no में s तो नहीं लगना चाहिए था ना, पर यहाँ हमने लगाया, which means the subject is not equal to the verb. That is, the subject is plural, but the verb is clearly singular in nature. This is what is called a subject verb disagreement. That is, for every time singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. जब जब हमारे पास ये duo नहीं मिलेगा, तब हमारा sentence में disagreement clearly हो जाएगा. Alright, let's get on to now very quickly some very specific rules that we have of subject verb agreement. Starting with first rule. When a subject is made up of two or more nouns connected by and, use a plural verb. अब देखो, ग्रामर को ना आपका काम हमेशा आसान बनाना चाहिए. ग्रामर इज अ टूल. Grammar is not a language. English is a language. Tools are used to help you make your work swifter, faster. So if I know that I am trying to be using, if I'm employing grammar, then my work should reduce. If my work in any ways is increasing, then it is not appropriate use of grammar. So simple है. ये बोलता है कि जब आपके पास दो subjects है, that is she and her friend, clearly subject number 1, subject number 2, and is a conjunction of multiplicity. मतलब अगर are, अगर मैंने बोला playing, अगर ये sentence पूरा ये होता, तो मेरा पहला रूल क्या बोलता है कि जब आपके पास दो sentences है and both of the sentences are connected by the word and, your verb must always be plural in nature. For the simple reason why, because सबसे पहले तो आप ये मैथ्स कर लो, 1 + 1 2, तो मैंने अभी ये डिसाइड किया था 2 or more is always plural. Another way, जब मैंने कहा she and her friend are playing, तो मैं सेंटेंस में पूछ लूंगी कितने लोग खेल रहे थे भाई, तो अल्टीमेटली कितने लोग खेल रहे थे में क्या आंसर आएगा हमारे पास? The answer is going to be 2 लोग खेल रहे थे, एक वो और उसकी दोस्त. तो जब हमारे पास अल्टीमेटली दो सब्जेक्ट्स थे, तो हमारा वर्ब भी क्या होना है? Our verb has to be plural in nature, which is why over here it is going to be plural, and that is what the first rule says. So if I have a sentence that says Ram and Sita are dancing, it cannot be is dancing, because अगर आपने is लगाया मतलब सिर्फ राम या सीता, but I want to say दोनों डांस कर रहे हैं ना, तो पहला रूल जो हमारा है वो and को लेके है. I hope this one's clear. Moving on to the next. Now, when the subject is made up of two or more singular nouns connected by or, use a singular verb. Okay, now और nor के 4 rules है, ठीक है, थोड़े confusing हो सकते हैं, so I will go really slow and you pay very heavy attention. Now or and nor, first things first,
सबसे पहले तो और, प्लेनली और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, अनलाइक एंड और का आइडिया कभी भी कनेक्टेड नहीं होता है, इट इज अ चॉइस, राइट। नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, सो क्लियरली इट इज ऑफरिंग योर चॉइस ऑफ नन, इनमें से कोई भी नहीं कर सकते आप। इसी का इंटायर कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है आइदर और एंड नाइदर नॉर। This is the entire correlative conjunction. They mean the same. So either you say or you say either or neither nor, it is not going to make a lot of difference. It is going to be the same. Now, when we come to or nor, we have four distinct rules. Please make sure you understand these rules play fair and they work only when your subjects are going to be connected by or nor, or either or neither nor. You cannot use this rule if you have a sentence with and. So the rules are very specific in terms of, the prerequisites that they want. Only when they have all of these criteria matching onto a statement can they be employed. Okay, now let's begin. पहला रूल हमारा बोलता है जब आपके पास और या नॉर के साथ दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर सिंगुलर, both of them are singular, right? So if you see the example over here, the book or the pen, book is also singular, pen is also singular. Books नहीं है, pens नहीं है, दोनों। अब वो या तो और से लगे या तो नॉर से लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। But the book or the pen, so if you have two subjects, two singular subjects that are being joined by or by nor, the verb will always be singular. So the book or the pen is missing. अगर मेरा पूरा सेंटेंस ये होता तो यहाँ पे देखो इज लगा, आर नहीं लगेगा। आर तब लगता जब मेरा सेंटेंस होता द बुक एंड द पेन, देन इट वुड हैव मेड मोर सेंस, राइट? बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज। हियर वी आर यूजिंग अ चॉइस व्हिच मींस दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग है भाई। कौन सी है मुझे नहीं पता, बट या तो वो बुक है या तो फिर वो पेन है। Which one out of the lot, that I still don't know. So which is why two subjects, singular subjects connected with or nor will always take a singular verb. Likewise, two subjects connected with or nor and have plural verbs, right? तो अगर books है और pens है तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे by default लगेगा are. Why? Because दोनों में से जो सी भी चीज मिसिंग है तो प्लूरल में ही ना। ना आई डोंट नो बुक्स मिसिंग है कि पेन मिसिंग है, बट जो भी मिसिंग है तो प्लूरल में ही। तो अगर दोनों सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर दोनों प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। हम लोग का पूरा कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन अराइजेस व्हेन वन इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ what happens when one is singular and the other is plural? So when you come across a sentence in which एक subject आपका singular होता है और दूसरा subject जो है आपका वो plural होता है, तो मेरा rule बोलता है that the verb will agree with the nearest subject. Now let's try and put that to example and simplify for ourselves as to how this rule tends to work. When a subject is made up of a singular and a plural noun, such combinations are called compound subjects. So when they're made up of एक singular हुआ दूसरा plural हुआ and they're connected by or they be connected by nor. अच्छा, or and nor twins है, हाँ? They are going to be twins in the sense that जो rules or के है वही rules nor के भी है, कुछ अलग नहीं है। The verb should agree with the part of the subject closer to it. So if you just see the sentence over here, the president क्या है? Singular. और his assistants, और लग गया ना, तो मतलब मेरा ये रूल लग जाएगा, राइट? और his assistants, assistant क्या है? प्लूरल। डैश रन, राइट? अब रन मेरा वर्ब है। नाउ हाउ डू आई नो कि रन होगा कि रन्स होगा? आई विल सिंपली सी द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। तो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट रन का क्या है? असिस्टेंट। असिस्टेंट मेरा प्लूरल है, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो नंबर दिखाना मेन वर्ब का काम होता है, एंड मेन वर्ब विल ऑलवेज शो प्लुरलिटी बाय ड्रॉपिंग द एस। सो द करेक्ट सेंटेंस ओवर हियर इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट और हिज असिस्टेंट रन फॉर money, चलो whatever, we just want to make some sense of the sentence, right? So ये चीज run। अभी यही सेंटेंस अगर स्वैप हो गया होता और ये मेरा सेंटेंस होता the assistants or the president,
तो फिर मेरा वर्ड हो जाता runs. और अगर मुझे इसको ऑक्सिलरी से एक्सपेंड करना होता तो माई सेंटेंस वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट और हिज असिस्टेंट्स आर रनिंग, and had I swapped it, it would have been the assistants or the president is running. ये आई होप दिस वन इज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज इस पे एक तो 100% आएगा आपको. देर विल बी वन एरर डिटेक्शन दैट हैज टू कम ऑन दिस, एंड दिस इज बाय फार द टफेस्ट रूल ऑल्सो. अगर आपको ये समझ में आ गया ना, then you will know subject verb agreement at the back of your hand. Moving on to the next, likewise, let's just take a few more examples. When I say neither the players nor the coach, right? So अभी neither nor से हो गया, and compound subject है, ये हो गया मेरा plural, ये हो गया मेरा singular. तो मेरे verb ने अभी मेरे rule ने क्या बोला था? Verb will agree with the nearest subject. करेक्ट है. नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट मेरा वर्ब इज जॉइनिंग है. इज जॉइनिंग का नियरेस्ट सब्जेक्ट कोच है. कोच सिंगुलर था ना, तो यहाँ पे क्या लग गया? इज. अगर ये चीज स्वप्ट होती अभी, नाइदर द कोच नॉर द प्लेयर्स, तो यहाँ पे क्या लग जाता? आर. लाइकवाइज, आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, राइट? Conductor being singular, singers being plural, right? Now my verb, what is the rule? What did the rule say? The rule said that the verb is going to agree with the nearest subject. So the nearest subject is singers. Singers plural था, तो यहाँ पे मेरा क्या लग गया? are. और अगर auxiliary नहीं होता तो main verb बिना s के रहता. So अगर ये sentence का मुझे tense change कर देना होता, so this sentence would have been either the conductor or the singers attend the concert. No attends. For me to put an attends, I would have to swap it, send singers to the first half, get conductors to the second half. I hope so much has been clear. Now, very quickly, we are just going to glide through a few rules. These are less of rules, more of fact checks. Okay. Some words are always singular. Which are the ones that are always singular? Words like each. Each का मतलब होता है एक. Each one, हर एक. Either, neither, everyone, collectively सब एक, anyone, कोई भी एक, someone, कोई भी एक, no one, कोई भी नहीं, everybody, collectively एक, anybody, कोई भी एक, nobody, कोई भी नहीं. If you just see during the discussion of these words, did we at all go to the count of two? No, we were either in zero or we were in one or we were in collective one. तो कभी भी कोई भी सेंटेंस में अगर आपको ये सब वर्ड्स दिख जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पूरा सेंटेंस सिंगुलर बन जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट कैन नॉट टेक एन एस बिकॉज उनकी स्पेलिंग में ही एस आता है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक सिविक्स, मैथ्स, मैथमेटिक्स, डॉलर्स, न्यूज, इनमें हम लोग एस प्लुरैलिटी के लिए नहीं दिखाते. इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग एस अपने आप ही लगाते हैं बिकॉज इनकी स्पेलिंग ही एस है. सो यूल हैव टू बी वेरी केयरफुल विच नाउन आर यू प्लेइंग अराउंड विथ, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द नाउन दैट यू हैव विल इट बी डिसाइडेड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इट गोइंग टू बी. तो अगर मेरे पास एक सेंटेंस है जो बोलता है सिविक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, तो अब ऑल्दो मेरे सेंटेंस मेरे वर्ड में एस है बट ये एस प्लूरल नहीं है, ये एस तो उसकी स्पेलिंग है ना. So words, that is nouns, that naturally have an S to their spelling are always plural in nature and they must not be considered to be plural at all. So now over here, अगर मुझे ऐसे words को कभी भी plural करना होता है तो mostly I will have to add a collective, right? Or I'm going to give the idea in a way in which you naturally tend to understand, okay, that this is what I'm trying to be talking about. But whatever said and done, words that naturally have, तो अगर मैंने आपको बोला rabies is a dreadful disease, रेबीज आर नहीं हो जाती है कि आज 4-5 कुत्तों ने मुझे काटा मुझे रेबीज चल रहा है. नो, रेबीज इज रेबीज विद द नेचुरल स्पेलिंग ऑफ इट एंडिंग विद एन एस. सो अगर एस से एंड हो रहा है तो प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई वो वर्ड क्या है. इज इट अ वर्ड दैट नीड्स एन एस? आई मीन इज द एस एज ऑफ अ प्लुरैलिटी और इज द एस एज ऑफ अ नेचुरल स्पेलिंग. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑलवेज सिंगुलर. नाउ कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स हमेशा यूनिट की बात करते हैं. दैट इज दे आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट झुंड, ग्रुप. बट
कलेक्टिव नाउन्स सिर्फ तब तक लिए जाएंगे सिंगुलरली जब तक हमें ये समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव एकजुट होकर काम कर रहा है. By saying this, what I mean to say is that it is very important for you to get the meaning right. If by reading the sentence you feel that yes, the collective is acting as one unit, only then will the collective be singular in nature. If you feel that there is a mention of collective, but ये collective साथ में काम नहीं कर रहे, आपस में ही एकदम लड़ चुके हैं. That is, now they are acting distinct, they are acting discrete, they are separated. Then at that point of time, they will be treated as plural. So to speak more on this, what I mean to say is that onto the same rule, sorry guys, onto the same rule, if I have to say the jury is deciding on the case, right? तो अगर मैंने आपको बोला the jury is deciding on the case, तो jury के बगल में is क्यों लगा? क्योंकि jury collective है. Jury is a panel of more than 2-3 people or depending on however, मुझे तो minimum 2 ही चाहिए ना. But ये अभी क्या है? Collectively पूरी की पूरी jury एक case पे decide कर रही है. तो यहाँ पे मैंने is किया because the action of deciding is being done unanimously. It is not being done separately. On the other hand, if I now have a sentence that says the jury are having troubles among one another, right? So अब यहाँ पे if you just see the statement over here, the jury, again my subject is singular, but now if you see the sentence, the jury are having troubles among one another, तो क्या अब ये लोग एकजुट होके काम कर रहे हैं? नहीं, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं. And now that I know ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, they are not acting as a collective, they are not acting as a unit, rather they are acting bifurcated. And if that is something that I can extract, then my verb becomes plural in nature. This is what the rule says. So collective nouns that refer to more than one person are usually treated as singular, right? Which is why the topic says almost always, unless they have had some sort of dispersion amongst themselves and that they do not want to be working together at all. All right, moving on to the next. Some words that are always plural. कौन से वो words जो हर बार plural ही होते हैं? So nouns जिनको आप predominantly समझ सकते हो कि वो लोग दो हिस्से लेते हैं एक बनने के लिए. So when it requires two to make one, they will always be in plurals. So for example, words like scissors, you need like two, no. Tweezers, everybody must have seen. Tweezers have also got like two long clasps to themselves. Trousers, दो टांग होती है हमारे पास. Pants, shears, socks, earrings, spectacles, gloves, ये सब हमेशा plural होते हैं क्योंकि हमेशा दो लगते हैं. You cannot have one. You at least need two. So your pants are of Levi's. Your pant is of Levi's आप नहीं बोल सकते. अगर आपको इसको सिंगुलर करना है तो आप उसके पहले कलेक्टिव लगाओगे. That is, my pair of spectacles is, but my spectacles are of Ray-Ban because आप दोनों की बात कर रहे हो. Moving on to the next. Now, the definite pronouns, the indefinite pronouns, several, few, both, many, others, ये सब हमेशा plural होते हैं. जैसे टॉप पे हमने indefinite के लिए पढ़ा था, तो हमारे वो जो indefinite pronouns होते हैं, the ones which were each, any, every, right? Likewise, several मतलब एक से ज्यादा, few मतलब कम से कम 3-4, both मतलब दोनों, many मतलब बहुत ज्यादा, others is इसको छोड़ के बाकी जितने भी है. तो बाय डिफॉल्ट जिस तरीके का आइडिया हम दे रहे हैं वो प्रीडोमिनेंटली प्लूरल ही है क्योंकि यूजिंग दीज वर्ड्स whatever be the extraction of idea, it cannot be less than one or one. It has to be of a minimum count of two. And if it is of a minimum count of two, it has to by default be plural always. So say for example, both were asking to be freed. Both हो गए ना, मतलब दो लोग पूछ रहे थे. Ultimately meaning matters. और मीनिंग में निकला कि भाई दो लोग तो हैं तो मैंने यहाँ पे वर लगा दिया. अभी यही चीज अगर सिंगुलर होती, ही वॉज आस्किंग टू बी फ्रीड, तो ही के साथ वॉज लगता. सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, सेवरल हो गए ना बहुत सारे, तो वो बाय डिफॉल्ट आर. अच्छा, आई होप आई डोंट हैव टू मेंशन दिस, बस सबको ये सब चीजें तो पता है ना कि
इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, वॉज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है. ये सब तो हम लोग को पता ही है. I hope I did not miss on this bit of information. Okay, now always know, guys, the pronoun you and I are always plural in nature. They never take singular. क्या आपने कभी ये सुना है किसी को बोलते हुए you is not talking to me? You never say that. You always say you are not talking to me. Do you ever go about by saying I is not going for the movie? No, you always say I am not going for the movie. Right? So you and I will predominantly always be plural in nature. So be careful for every time you see you and I. Likewise, you were invited to come. You was nahi likhenge. Plural. You are asked to clean well. Right? You sing so well. You sings nahi kar sakte usme. You have to say you sing so well. So I hope this bit. So this is more of an exception rule, is how you can say. Because although you and I can always be singular, they're always singular in nature, but we also know of the fact that they always profess the idea, or they will always have the idea mentioned with plurality. Getting on to the next. Okay, now there are again new information download. Okay, now if you have subjects and the subjects are not conjoined with and or, there are more ways in which subjects can be brought together. अच्छा, subjects हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, फिर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सब्जेक्ट. इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो इंडिपेंडेंटली आ सकता है and you don't need anybody's help or support to give out the idea. So if I have a sentence that says Ram is playing, now Ram doesn't need anybody's help in this statement. या अगर मैं बोला Ram and Sham are playing, now Ram and Sham are both okay. Nobody needs anybody's help while playing. But if you see that your sentences are being used with words like with, as well as, in addition to, accompanied by, together with, and no less than, please know that your subject is now dependent in nature. Right? Dependent as in main के साथ वो add हो रहा है. तो अगर मैंने बोला राम with his friends, तो राम तो सिंगुलर है, बट जब तक राम नहीं आएगा तब तक उसके फ्रेंड्स तो आ ही नहीं सकते ना, बिकॉज फ्रेंड्स राम पे डिपेंडेंट है. ये सेंटेंस राम एंड हिज फ्रेंड्स नहीं है, ये सेंटेंस है राम विद हिज फ्रेंड्स. लाइकवाइज एज वेल एज, ये इसके साथ अगर मैंने बोला गोल्ड एज वेल एज सिल्वर इज एक्सपेंसिव, तो ये इज क्यों लगा? क्योंकि भाई गोल्ड है, ये मेन सब्जेक्ट है. एज वेल एज तो मतलब उसके साथ साथ, इन एडिशन टू मतलब किसी के साथ तो ऐड हो रहा है ना. तो मतलब अगर मैंने बोला द मदर इन एडिशन टू हर चिल्ड्रन, तो मेन मुद्दा तो मेरा मदर है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल हमेशा कहता है दैट योर वर्ब विल अग्री विद द मेन सब्जेक्ट with no dependent subject. Never is it going to agree with a dependent one. So depending on how your subject is, so shall be your verb. So if I now know that my main subject is singular, verb singular होगा. But if I now know कि मेरा main subject plural है, तो then clearly मेरा verb भी plural होगा. So if I have a statement that says the mother along with the boys is waiting, तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? मदर है और बॉयज है. बट अब ये दोनों सब्जेक्ट्स कॉन्जॉइन किससे हो रहे? एंड से नहीं हो रहे, और से नहीं हो रहे, अलोंग विथ. तो मतलब मम्मी के साथ साथ कौन है? बॉयज. विच मीन्स मम्मी तो आ सकती है अपना अकेले, बट जब तक मम्मी नहीं आएंगी बच्चे तो आ ही नहीं सकते. तो रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में द वर्ब विल अग्री ऑलवेज विद द मेन सब्जेक्ट, नॉट विद द ऑक्सिलरी और नॉट विद द डिपेंडेंट सब्जेक्ट. अब यहाँ पे मदर इज सिंगुलर, क्योंकि मदर इज सिंगुलर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? इज. अभी यहीं पे होता द मदर्स अलोंग विद देयर चिल्ड्रन, तो मदर्स अगर ये चीज होती तो यहाँ पे ये चीज लग जाती आर. Yes, Ananya, what is your doubt? I'd be more than happy to help you out with that.
Yes, I will, Aditya. I will get the PDF uploaded definitely so that you all have access to the rules and then you can do it properly. Ma'am, आप कहाँ से हैं? Does that matter? I am virtually available here, and that should be for everybody, right? Okay. In the meanwhile, for as long as Ananya is writing her doubt, I hope this is clear. Let's move on to the next. So likewise, when I say daddy as well as my brothers is enjoying the party, तो यहाँ पे as well as आ गया, तो मतलब dependent बन गए. और अगर ये dependent है, तो daddy हमारा singular है, brothers हमारे plural है, पर ये independent, ये dependent है. Verb तो हमारा agree करेगा भाई, main subject के साथ. Main subject daddy है, daddy singular था, इसलिए यहाँ पे मेरा लग गया is. Alright? नेक्स्ट, टू सिंगुलर, ये हम लोग ने अभी ऊपर ही बात कर लिया था कि जब हमारे पास दो सिंगुलर होंगे तो हमेशा आइदर और के साथ है ना. तो अगर मैंने आपको बोला कि आइदर मम्मी और डैडी इज कमिंग विथ मी एट द आउटबाउंड, सो या तो मम्मी या तो पापा, दोनों तो आ नहीं रहे ना, क्योंकि वो और से है तो इट हैज टू बी सिंगुलर. दिस इज अ रूल दैट वी जस्ट स्टडीड ऑन टॉप. Very quickly, we're just doing a revision of that rule. Getting on to the next. If a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular, which means कि जब आपके पास एक phrase आ जाएगा, like for example, when I say one of the boys is yelling so loud, तो यहाँ पे हमारा word क्या है? One. But एक phrase आ गया ना of the boys, मतलब one कौन? कहाँ से? लड़के. So now, although I'm talking about one of the many, but ultimately तो जिसके बारे में बोल रही हूं मैं, जो चिल्ला रहा है वो तो एक ही बंदा है ना, तो यहाँ पे क्या लग गया? is. Likewise, one of the members, we're not talking about two of the members or three of the members, तो फिर वो are लग जाता. But one of what? One of the members. तो ultimately against the rule कितने गए? एक ही गया ना. Usage, guys, see, every time what you're focusing on is the usage. The better you understand the usage of the sentence, more clarity will there be when it comes to subject verb agreements. मैम, आपकी वीडियो में शहर कैसे? आई डोंट नो. ओके, ऑलराइट. नाउ, some indefinite pronouns like some, most, all, none are singular or plural according to their meaning. Okay. Now, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम लोग ने ऊपर पढ़े थे, कुछ वर्ड्स प्रीडोमिनेंटली सिंगुलर होते हैं, वर्ड्स लाइक नाइदर, आइदर, एवरीवन, एवरीबडी. फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट प्लूरल होते हैं, जैसे सेवरल हो गया और जैसे मेनी हो गया. बट फिर आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, वर्ड्स लाइक सम, वर्ड्स लाइक मोस्ट, words like all, and words like none. They can be both. They can be either singular or they can either be plural depending on the meaning. Why? Because ये जो determiners होते हैं ना, ये determiners हमेशा लिखे जाएंगे of something. जैसे अगर मैंने बोला some of, तो by default मुझे बताना पड़ेगा ना some of what? जैसे बोला some of the boys, या none of the toys, या all of the children, या मोस्ट ऑफ द क्राउड. तो कहीं ना कहीं मुझे इनके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन देना पड़ेगा. ऑफ किस पे गया? गर्ल्स. ऑफ किस पे गया? आइसक्रीम. एंड इसका रूल कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन शुड यू बी डिसाइडिंग योर वर्ब. तो अगर मैंने बोला सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, तो सम ऑफ हुम? गर्ल्स. गर्ल्स प्लूरल था ना, तो यहाँ क्या लग गया मेरा? प्लूरल वर्ब. एंड लाइकवाइज मैंने जब आपको बोला सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट, सम ऑफ द आइसक्रीम्स नहीं है वो, सम ऑफ द आइसक्रीम है. आइसक्रीम सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या लग गया? सिंगुलर. लाइकवाइज द मोमेंट आई हैव सेड नन, तो जब मैंने बोला नन ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट. लाइकवाइज व्हेन आई से नन ऑफ द पिज्जाज, पिज्जा हो जाता, वो प्लूरल हो जाता, तो वो चीज आर में चेंज होता. नन ऑफ द पिज्जाज आर लेफ्ट. ओके, गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट. Expression of time, money, weight and distance are singular even if the form is plural, क्योंकि हम इनमें हमेशा collective sense में बात करते हैं. तो अगर मैंने बोला 45 years of age is good enough to be a CEO या are good enough, वो हमेशा is good enough होगा. क्यों? क्योंकि we are not saying 1 plus 1 plus 1 45 times, हम 1 1 नहीं ऐड कर रहे. हमने 45 एक टर्मिनोलॉजी की तरह लिया है उसको, because it is one terminology. Irrespective of how many things made it up, it will always be taken in a collective sense. So when I say 45 years of age is good enough for a CEO, it cannot be are, right?
लाइकवाइज अगर मैंने आप लोग को ये बात बोली कि 5 किलोमीटर्स ऑफ डेली वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ या आर गुड फॉर हेल्थ, तो क्लियरली ये चीज क्या होगी, दिस इज सपोज टू बी इज गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज अगेन 5 kilometers इज वन terminology, it is not 1 plus 1 plus 1 5. Likewise 2 years is a long time, 2 years एक साथ लिया ना, ये पूरा एकजुट है. Likewise $1 million was, so it's not about how much money made 1 million, एक बार में मुझे कितना देना था, मुझे देना था 1 million. Yes guys, PDF अपलोड करवा देंगे हम definitely. On to the next. Now this is very easy. हमेशा याद रखना guys, a number plural होता है, the number singular होता है, because a indefinite article होता है और the definite article होता है. तो अगर मैंने आपको बोला a number of students are waiting, क्यों? क्योंकि मेरे रूल ने बोला a number plural. The number of student outside is not, the number हमेशा singular में जाएगा. ओके जब फ्रैक्शंस यूज करते हैं इट इज द सेम जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, फ्रैक्शंस के साथ भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हमेशा लगेगा. तो 1/2 of the cake was consumed, तो 1/2 of what? केक, केक सिंगुलर है तो क्लियरली ये कंज्यूम. 1/4 of the employees were attending, तो 1/4 of what? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज प्लूरल है, यहाँ पे हमारा लग गया वर. कैरिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं देखो जो बाय डिफॉल्ट एस में एंड होते हैं, राइट? एथलेटिक्स, जेनेटिक्स, पॉलिटिक्स, जिम्नास्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक कुछ नहीं होता है, जिम्नास्टिक करने जा रहा हूं नहीं होता जिम्नास्टिक्स. पॉलिटिक, आज चलो कुछ पॉलिटिक की बातें करते, पॉलिटिक्स. सो दीज आर वर्ड्स दैट नेचुरली हैव एस. The S is not plurality, and since it is not plurality, it is not going to be taking any plural verb. Gymnastics is very popular, and likewise the gymnastics shown in the field today were outstanding. अब इसमें क्यों plural कर दिया? क्योंकि अब हम लोग इसको plural connotation में ही बात कर रहे हैं. Okay. Adjectives used as nouns are considered poor. अगर आपका adjective use करा जा रहा है, but the adjective is acting as the subject of the sentence, तब वो हमेशा plural. जैसे the poor are to be helped. The poor is an adjective, but यहाँ पे तो ये subject है ना. तो मेरे रूल ने क्या बोला कि अगर adjective है तो वो हमेशा plural के साथ. The efficient are what this country needs. Efficient adjective है ना, but यहाँ पे क्या कर रहा है, ये subject का काम कर रहा है. मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर. ओके ये हम लोग ने अभी टॉप पे बात किया था. कलेक्टिव नाउन्स दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसका मेंबर कैसे काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है या अकेले अलग अलग काम कर रहा है. तो द कमिटी इज अगेंस्ट द प्लान, वी नो कमिटी एकजुट है. द कमिटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट ही मतलब है कम से कम 2 ओपिनियन तो है ही भाई. और जहां हमको पता चल जाता है कि हमारा जो कलेक्टिव है वो एकजुट ना काम करके वो अलग अलग काम कर रहा है, then at that point of time we clearly have to have plural. So then over here it is going to be the committee are of different opinion. Okay, just moving on to this one last rule that we have guys, and then post that we are very quickly going to try our hands on a couple of questions just to see if we've got the topic right. There is, okay, now अगर आपके पास कोई भी, नो दिस इज अगेन रीइटरेशन जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था. मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में क्या बताया था गाइस कि सेंटेंस में जरूरी ये है कि सब्जेक्ट हो. शुड अ सेंटेंस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एवरी टाइम? ऐसा कोई रूल नहीं है. नाउ सेंटेंसेस दैट बिगिन विद देयर एंड हियर हैव द सब्जेक्ट, बट सिंस दे बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड बीइंग देयर, क्या देयर उसका सब्जेक्ट बन जाएगा? नो, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, बट अनलाइक एनी अदर सेंटेंस जिसमें पहले सब्जेक्ट आ जाता है फिर वर्ब आता है, सेंटेंसेस ऑफ देयर एंड हेयर में क्या होता है, पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है. इट इज वाइस वर्सा, एंड बिकॉज इट इज वाइस वर्सा you have to go a little further to find the subject and rearrange the sentence. तो अगर मैंने आपको बोला there are many questions, तो there तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, बस क्योंकि पहला वर्ड है क्या वो सब्जेक्ट बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सब्जेक्ट सेंटेंस में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है. तो अब देर तो कोई सब्जेक्ट नहीं है. अब देखो वर्ब पहले आ गया, पर मैं यहाँ इज लगाऊं कि आर लगाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा वो? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू ट्रैवल फर्दर इन द सेंटेंस एंड सी वेयर माय सब्जेक्ट लाइज, बिकॉज द वर्ब विल अग्री
only as per my subject. So what am I going to do? I'm going to go towards the rear end of the sentence. I'm going to see what my subject is. The moment I find and locate my subject and I see my subject is plural in nature, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? There are. Right? अभी यही sentence अगर होता there is a question, तो यहाँ मैंने is किस basis पे लगाया? On what basis have I put the word is over here? Because the moment I say there is a question, my subject is question and question singular है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया is. Right? Exactly like the burger sentence. So is the case with here. Here के साथ भी. So there and here दोनों के साथ यही rule लगता है. Okay? Alright. And with that we come to an end of the topic today. Now very quickly, I want all hands on chat box and I need to see if you guys can identify what the correct answers over here are going to be. Now put the correct answer onto your papers. Let's begin. I will do a few with you and then of course you guys can start doing it yourselves. Right? Let's see. The children dash to the playground every morning. अब हर plural subject ऐसी नहीं लेता. जैसे children's कुछ नहीं होता. Child children. Isn't it? So जैसे people's कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पे क्लियरली क्या है? चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है. और अगर प्लूरल है तो मेरा क्या होगा यहाँ पे? विदाउट एस आएगा. सो द चिल्ड्रन वॉक टू द प्लेग्राउंड एवरी आफ्टरनून. लाइकवाइज माय फ्रेंड, फ्रेंड है, सिंगुलर है और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो मेरा मेन वर्ब क्या कर लेगा? मेरा मेन वर्ब एस को ले लेगा. सो माय फ्रेंड गिव्स मी हिज potato chips at lunch. She always, right? Always singular है. Sings because she आ गया. She is singular और मेरे को पता है कि मेरे पास कोई auxiliary नहीं है, तो मेरा हमेशा verb s को लेगा. बस इतना हमेशा याद रख लो. Ram plays, the boys play. दोनों में नहीं लग सकता. Right? And grammar में ना एक बहुत अच्छी चीज होती है. Whatever sounds good to the ear is good English. जैसे आपने बोला the boys plays, इतने एस लगा के हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Right? It makes no sense. It doesn't even give that grounding to the sentence the way we want it. So we definitely know that this is not going to be the right way to be putting it. Let's do the next. He takes pride. Very good. Okay. Gregory fish or fishes for bass in the lake. Fishes because again it is going to be plural. It is going to be singular. Gregory is one. We is or are. Now we में s नहीं है, but we तो एक collective है ना. It's a plural pronoun. What has happened to me? I'm saying collective. My bad guys. We is a plural pronoun. तो we अगर लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा हम लोग का? We are tired of. No sky. Gregory fishes. Gregory is singular, my dear. Because it is singular, it is going to take fishes and not fish. The melons were sitting. They have. His aunt goes. Angela, singular है ना? Does. You, अब you and I हमेशा क्या होते हैं? They are always plural. So you read well. I hope everybody paid attention to this one. Their cat hides under the table. Okay? Did everybody get this one right? Let's try a few more. Now let's see over here. Okay, people are still solving. I will wait a moment and then maybe we can begin with the rest. Okay. Let's go ahead and see the other ones. Now, you is my favorite aunt. Do we ever say you is my favorite aunt? You are. This cat goes outside at night. Correct है ये. Your mother make great pies. Makes. Wrong. The trophy were taken from the case. The trophies नहीं है. Trophy है ना singular. The trophy was. So this is also wrong. हमें बताना है correct answer क्या है. तो हमारा आंसर इसमें होगा B. Likewise अगला देखते हैं. Repeat 8th one. Okay. हितेश in the 8th one they हो गया ना. They बताओ singular pronoun है कि plural pronoun है?
They is singular or plural in nature? They is plural, and क्योंकि they plural है तो उसका verb भी plural होगा. Plural subjects always take plural verbs. So which is why it is supposed to be they have a blue house. Is that clear? Moving on to the next. Now she performs the skit well. Correct. It were a stormy. It was. We're talking about a night. Night तो singular है ना. अभी it तो कोई subject नहीं है. Is that not right? So now over here, likewise जैसे there और here में किया था, हम लोग क्या करेंगे? We are going to go towards the end of the sentence and then we are going to see which of the following is going to be the right subject. So यहाँ हमने निकाल लिया stormy night, night singular है, तो यहाँ पे लगना चाहिए था was. We was trimming, we was कैसे हो सकता है भाई? We तो plural है, तो we were trimming, right? Likewise, you has a lot. तो सुनने में ही अटपटा लग रहा है, मतलब ऐसे पढ़ के ही समझ में आ जाए कि इसमें कुछ बहुत मेजर गड़बड़ है. हमारे रूल ने बोला था भाई यू तो कभी भी सिंगुलर नहीं लेता है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टडिंग टू डू. ओके. Likewise for the third one, I need you guys to tell me. For the third one, guys, I'm going to take a pause here for two good reasons. A, I've been speaking back to back, and second, I want you guys to give it a try. So on to the third one, I need you guys to tell me what the correct answer is going to be, A, B, C, or D, and you're going to tell me what the rectification of those are also going to be. Quickly. We're crunching on time, by the way, so I just want you to be a little quicker, please. I will wait. Okay, so we have an incoming answer. Now, Torin likes spaghetti. It has to be likes. Very good. I wants. It cannot be. It's got to be want. Lowell constructs bridges, which is okay because our subject is Lowell, which is correct in itself. He calls his friend every day. This should have been calls and not call. Excellent. So you've gotten the answer right. Let's try practice 3. Okay, what do you guys think? Do you want a moment to do until 10 or do you want to do it simultaneously? Because I understand there's a slight bit of lagging, right? Like a couple of seconds. So just let me know. Should I wait, give you 2 minutes and that you're going to ping the answers, or do you want me to do it however you guys want? Let me know, guys, because I will also need some direction. Okay, so I have nothing and I don't know what that means. Okay, yes, wait. I will wait. Okay. The next 10. Quickly. Just keep doing, and as and when you're doing, keep writing it on the chat box. I will wait for 2 minutes. Okay? Okay. So, Hitesh, I think we'll just give it 2 minutes, my dear, because there are a few students who do want to give it a try. So, I think it's a good idea to let them. अच्छा ठीक है. Simultaneously. चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम लोग इसको साइमल्टेनियसली ही करके खत्म कर लेते हैं. ओके, because I have 2 more exercises after this, by the way. Now, the tiles in the corner, tiles है, are broken. Which type of pens? Dash your favorite. Now over here, which type of pens? कौन सी pens है? कौन से तरीके की pens है? Right? Was your favorite? Were your favorite? The letters from K, letters, have been found. The forks in the drawer, forks, were bent. My interest in craft, interest, keeps. Two colors of the flag have. Two colors हो गए. The best of all the entries was. Because best मतलब वो एक जो सबसे अच्छी थी. One of the robins has. Most members of her family are.
The pieces of furniture are, because here the subject is not furniture, we're talking about the pieces of furniture. So over here, these are called subject complements. Okay, let's try the next. James and his brother. And दो लोग हो गए ना, दो लोग लीव कर रहे तो आर. Neither the soldier nor, अच्छा neither nor के साथ हो गए. Soldiers हो गया हमारा plural, general हो गया हमारा singular, verb agree करेगा nearest subject के साथ, है ना. नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर. सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा हमारा, was. Kisha and her friends were, and है ना, 1+1. Either he or his dogs. He is singular, dogs is plural. Verb will agree with the nearest subject. Nearest subject dog है, dog हमारा plural था, तो यहाँ पे क्या लग गया, were. For their project, Tiffany and Justin are making a good, क्योंकि and से हो गया. And the last of the lot, guys, let's just see. Several of the trucks are, because several is always plural. Everybody, singular, was. Some of the television programs were, क्योंकि some आ गया. Many, many हमेशा object of preposition में जाता है. Many of the vegetables were. Yesterday, everyone is always singular, was. The rugby team, singular, practices. The soccer team, practices, singular. The class contributes, singular, collective. And my class is the largest, again, singular in nature. And with that, we come to an end of the topic. I hope we discussed the topic. All of these were very, very clear. If there's any doubt, please feel free to write in the chat box, and I'd love to take it up. I have taken that feedback of yours, and I will get the PDF uploaded so that you all have all the rules consolidated onto one corner. But please make sure that you practice yourselves as well, and you just don't rely on the amount of exercise that we did. This is a super important topic, and when I say super, I literally mean to say that this is really important in terms in from an examination point of view. कम से कम अगर error detection आ रहा है तो आप इतना मान लो कि अगर 5 error detection है तो 2 तो इसमें से आने ही आने हैं. Nothing like keeping 2 marks, up your kitty. So make sure you again go through the entire video to be able to spotting error. I have a problem. Yes, Hitesh, what is the problem here? See, you will only get better with spotting error once you have individually taken care of all of the grammar topics, right? So now that you've done subject verb agreement, I think a good idea should be to be able to just practice more of subject verb agreement, so that at least that is one spotting error that you're confident with. Name the book for practicing. Now, see, I go old school when it comes to grammar practice, so I prefer Renan Martin every time. And I feel Renan Martin sort of covers all of the rules of grammar, and it is the most easily available and the one book that has extensive exercise also. So, although you do have competitive books which are going to give you a lot of topics to study from, and I don't prescribe of any book particularly. Of course, if you're enrolled with us, you would have had ample study material been given out to you, and which has good practice exercise to itself as well. But if you don't have anything, you don't really have to go hunting around. Your 10th standard grammar composition by Renan Martin is just about perfect. It's going to take care of all your grammar needs. Okay, pleasure conducting a class with you guys, and I'm going to see you guys really soon with another important MHCET or OLET topic. Until then, please make sure that you thorough yourself with subject verb agreement, because it is a very, very important rectification. And I'm going to see you guys next time. Thank you so much, everybody. Bye bye.